Hey YouTube, thanks for visiting. Hope all you are doing well. So this is our fourth lecture on the question practice series on for the upcoming CSIR NET exam. Okay. So I welcome you everyone for this session, the question practice session for the several variable for the function of several variable on real analysis. Okay. And this is our requested class also because one of our viewers I think शुभम ने कमेंट किया था कि सर सेवरल वेरिएबल का भी क्लास लीजिए, तो आज एक क्लास है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऑफ सेवरल वेरिएबल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड कोई है तो एक बार बता दो कि ऑडियो एंड वीडियो ठीक से आ रहा है कि नहीं. ओके, so I think all the audio and video are okay. So this is the fourth lecture I think on question practice series. Okay, so welcome you to all this session. and मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो अपकमिंग सेशन नेट या फिर गेट के प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस थ्रू द कॉन्सेप्ट्स. ओके, and this session and this chapter is also a very important chapter. From here each and every year questions comes. Obviously the weightage of this chapter is very good in the exams. Okay, so and those who are watching for the first time, so please give like, share and subscribe if you have or if you like the content. Okay, so and आपके एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास शेयर करना. ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो क्या बोल रहा है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वाई बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो वेदर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू हियर. ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, चार ऑप्शन गिवन है. ओके, सो लेट्स सी. So see, this is a function in which the numerator and denominator have same types of term. That means the order of the terms in the numerator is 3 and also in the denominator is 3. Okay, so in this case you all know that we put y equal to mx in general. Okay, so see here क्या है कि y equal to mx पुट करके देखते हैं तो लिमिट क्या होगा, x टेंड्स टू 0 होगा. लिमिट x टेंड्स टू 0, y इक्वल टू mx मीन्स I think it should be x square into mx by x cube plus m cube x cube. Okay, so this is equal to limit, because if we put y equal to mx then y tends to 0 means x tends to obviously 0 होगा, यानी कि ये जो mx है. ठीक है, that's why this double limit converted to a single variable and single limit. Okay, so x tends to 0 क्या होगा, m x cube by x cube into 1 plus m cube, and this is equal to m by 1 plus m cube. Okay, so this depends on m, and we know that in this case if this gives different values for different values of the limit for the different values of m, that is m dependent, then we say that this is not the limit does not exist, that is the function is not continuous. Okay, so here in option A it says that it is continuous at 0. No, obviously this is incorrect. The if B says that f is discontinuous at 0. Yes, this is correct. Now option C says that f0y is continuous at 0 0. Now if we calculate first f0y, then f0y equal to what, x equal to 0 means 0 into y by 0 plus y cube. So this is equal to simply 0, and this is a 0 function, you and all know that this is obviously continuous. Okay, continuous, that means this option is correct one. Now option D says that f x0 is continuous at 0 0. So similarly if we calculate f x0, then we get x into 0 by x cube plus 0, that is equal to 0, and which is obviously continuous. Okay, so that means this option is also true. Okay, so here in this case, in these questions, option B, C and D are the correct statement. Okay, now next question. जो लाइव में है एक बार कमेंट करके बताना कि
यहाँ पर जो है ऑडियो एंड वीडियो ठीक से आ रहा है कि नहीं. ओके, so it says that consider the function fxy equal to x square by y square, then the derivative of the function at 1 1 along the direction 1 1. That means here we want to find the derivative of some function at some point along some direction. Okay, that means this is simply questions of directional derivative. Okay, and there are two formulas basically to calculate the directional derivative. First one is the most useful formula, which is the vector formula. We all know that the grad f dot the direction, suppose u, this is unit vector, at that point grad f at that point which is given, and this point gradient at that point, obviously at that point, and this value gives you the directional derivative. Okay, grad f dot u and the respective points obviously. And number two formula is from the reanalysis, the directional derivative at the direction u along the direction u at the point a, and here a equal to obviously two function. Okay, so suppose a1 and a2, so this is equal to, this is a vector आप सोच सकते हो. ठीक है, so this is equal to what, the formula is limit h tends to 0 f of a plus hu. Okay, a plus hu minus fa by h. Okay, now you can apply any of these those formulas. Here I apply formula 1 which is most easy in that, most cases में ये easy होता है. Okay, so here f is equal to, given that x square by y square. Okay, now gradient of f which is equal to, we all know that I del x plus gradient means this one j del y of the function f, that is x square by y square. Okay, so first one is I del x of this one, so this gives 2x by y square I cap plus del y of 2x by y square, means here y square means minus 2y to the power minus 3, that is this should be minus 2x square by y cube and j cap. Okay, because your x square is treated as constant in case of partial derivative with respect to y. Okay, so now grad f at the point, what, here the point is at the function at 1 1. Okay, so grad f at 1 1, this is equal to simply 2i minus this is 2j cap. Okay, this one. Okay, now we have to find the direction, so this is 1 1, that is the direction vector u is equal to I plus j cap, and we have to find the unit vector, so this is I by root 2 plus j cap by root 2, so this is the unit vector direction. Okay, now we have to calculate the grad f dot u. Okay, so grad f dot u, this is equal to what, this is equal to 2i minus 2j dot of I by root 2 plus j by root 2. Remember, this direction is always this is always be a unit vector. If it is not given in the question, then you have to convert the normal vector to the unit vector, because this is always should be unit vector. Okay, so this is equal to I dot I means 1, so 2 by root 2 minus 2 by root 2, which is equal to 0. So the right answer is option D, 0. The next question is number 3 is fxy equal to 1 by x square plus y square. Okay, and xy not equal to 0 0 and 0 xy equal to 0 0, then which of the following statement is true? Okay, so we have first check the continuity. Similarly, here you can also put that y equal to mx. If I put yeah, I think this will be whole. So if we put y equal to mx, then the double limit converted to single limit, and this gives x tends to 0 1 by x square plus m square and x square. Okay, so this is equal to limit x tends to 0 1 by x square into 1 plus m square. Now this tends to, at x tends to infinity, this tends to infinity, I think. Okay, that means the limit does not exist finitely, so that means this is not continuous, and it is given that it is continuous at 0 0. No, it is not continuous at 0 0. We can also apply different approach for showing that this is not continuous. Okay, so here is just
the simple way, and it says that differentiable. So we all know that continuity implies differentiability, okay, and contrapositively not continuous implies not continuous implies, that means we all know that not continuous implies not differentiable, okay. Sorry, differentiability implies continuity, okay, that is the contrapositive is differentiable is implies continuity, therefore contrapositively this one you all know. So this is not continuous, that means यहाँ पर तो differentiability का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, that is f is not differentiable, that is this is the given answer, the right answer, and ये भी not true. So f is not differentiable at 0 0. The next question, it is very easy question, comes in the CSIR net. It says that log of cos of x cos square e to the power x square plus sin xy, then the function we have to calculate del y of del x, so of fx, okay. So the first perform will be del x of, so this is equal to del y of del x of this function, that means log of cos square, so this means 1 by cos square of exponential x square into ये तो बाहर में होगा del x of क्या होगा cos square exponential x square, okay, and plus cos of x plus y, okay. So this is del value of, now this is equal to del value of, देखो यहाँ पर एक भी y का फंक्शन नहीं है, दैट मीन्स del y करेंगे तो क्या होगा, इसका पूरा के पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि y का पार्ट होगा तभी ना del y में वैल्यू आएगा, एंड यहाँ पर होगा माइनस साइन ऑफ x प्लस y, ओके. सो द करेक्ट आंसर विल बी minus sine of x plus y, option C. The next question, it says that f of xy equal to mod x plus mod y, xy not equal to 0, equal to 0, xy equal to 0 0, then which one of the following statements are true? We all know that this mod function, suppose if we write mod of x minus any point a, we all know that this is continuous, okay, but not differentiable at the point x minus a equal to 0, that is x equal to a. So ये x equal to a point में differentiable नहीं होता है, but continuous all point में होता है, all modulus function. So this is sum of two modulus function, that is this is continuous, and यहाँ पर कौन सा point का बात क्या है, 0 का. तो sum of two continuous functions is always continuous, that means fxy is continuous. fxy is discontinuous, no, this is not discontinuous, and it says that fxy is differentiable at 0 0, no, fxy is not differentiable for this function mod x, it is not differentiable. Good evening or Nittaraj, okay. So you can see the class for the upcoming CSIR net, and this class is based on the question practice session on several variable, okay. We already covered 3 sessions of real analysis, so you can see the classes, previous classes also for your practice, and you can also बोल सकते हो कि कौन सा क्लास आपके लिए सही होगा, मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो वो बोल सकते हो कमेंट में, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सेशंस लेके आने के लिए, ओके. सो mod x, we all know that mod x is not differentiable, okay. So mod x is not differentiable, that means a कौन सा पॉइंट में होगा, it is not differentiable at 0, okay. So that is mod x is not differentiable at 0. Similarly mod y is not differentiable at 0, that means mod x plus mod y, and ये जो है दो वेरिएबल का फंक्शन है तो यहाँ पर पेयर वाइज होगा 0 0, ओके. सो दैट इज f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, एंड यहाँ पर नॉन ऑफ द दिस ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, जस्ट सेकंड, ये प्रीवियस ईयर कौन सा था, ये वाला, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट for fxy belongs to R2, let fxy equal to 2xy x square plus y square, xy not equal to 0 0 and 0, if xy equal to 0 0 then fxy का मतलब के बारे में बोला है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा. तो चलो देखते हैं fxy एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है.
तो वी ऑल नो दैट एफ एक्स 0 0 दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला जो है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 बाय एच. ओके, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच 0 का वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लो एफ ऑफ एच 0. ठीक है, यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा 2x की जगह एच एंड वाई की जगह 0 0 बाई एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एच 0 का जो वैल्यू होगा वो भी 0 होगा एंड एफ 0 का वैल्यू तो 0 ही है. ओके, सो 0 माइनस 0 बाई एच दैट इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स दिस इज एग्जिस्ट. ओके, exist. Now similarly if y 0 0 equal to limit k tends to 0 f of 0k minus f of 0 0 by k लिख सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू सिमिलरली देखोगे अब लिमिट k टेंस टू 0 यहाँ पर f ऑफ k 0k का वैल्यू भी 0 होगा, इसका वैल्यू भी 0 क्योंकि यहाँ पर तो प्रोडक्ट है x एंड y का, तो ऑब्वियसली सॉरी दिस इज नॉट 0 दिस इज h. ओके, so this is equal to 0, so obviously this is also exist. Okay, but now we check the continuity. Suppose let, so that is fx fy has exist at fx continuous, so this option so ये option discard हो जाएगा, do not exist and do not exist, ये दोनों discard हो जाएंगे. Now we check that the whether f is continuous at 0 0 or not. Okay, so देखो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर एंड यहाँ पर जो ऊपर मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है. ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स जो पाथ चूज करके देख सकते हैं कि ये m के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा. ठीक है, तो एज x टेंस टू 0 ऑब्वियसली y टेंस टू 0 होगा. तो ये जो डबल लिमिट दिस इज कन्वर्टेड टू सिंगल लिमिट, ओनली लिमिट x टेंस टू 0 2x y इक्वल टू एम एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ओके, this is equal to limit x tends to 0. Okay, 2m x square by x square take common 1 plus m square. Okay, so x square got cancelled, so this is equal to 2m by 1 plus m square. So this is depends on m. Okay, depends on m, that means this limit gives different values for different values of m. different values देगा m के different वैल्यू के लिए, but लिमिट को एग्जिस्ट करना होगा तो यूनिक वैल्यू देना चाहिए. तो दिस इज एम डिपेंडेंट मीन्स दिस इज नॉट कंटिन्यूअस. ओके, सो ऑप्शन ए सेज दैट इट इज कंटिन्यूअस. नो, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, so that is option D, right? F is discontinuous but fx fy exists. Okay, I think this is very useful, and if these lectures are helpful then please give a like and obviously comment in the comment section below. Next question. So if possible, let alpha equal to this one and beta equal to this one. Okay, so then which of the following option is true? अल्फा एग्जिस्ट बीटा एग्जिस्ट यहाँ पर बोला है. देखो ये जो है ये एक थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करके भी कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि वी ऑल नो दैट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है. देखो सिमिलर टाइप्स ऑफ फंक्शन है. साइन ऑफ दिस इज सपोज कोई एक फंक्शन है, सपोज इसको z पकड़ लो तो ये भी z है. ठीक है, तो एज एक्स वाई टेंस टू 0 0, ठीक है, z टेंस टू 0 होगा ऑब्वियसली. दैट मीन्स दिस कन्वर्टेड टू साइन z बाई z टाइप ऑफ फंक्शन, दिस टाइप ऑफ फंक्शन साइन ऑफ z बाई z as limit z tends to 0, this is obviously 1, that is this is exists. Okay, so obviously this is exist. Okay, so alpha obviously exists. तो यहाँ पर है, यहाँ पर does not exist बोला है एंड यहाँ पर भी does not exist है बोथ, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया. नाउ बीटा, तो बीटा के लिए देखो बीटा इक्वल टू क्या है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 x square minus y square by x square plus y square. See here also the degree of numerator and denominator is same, that is second degree, that is we can take y equal to mx. Okay, so as x tends to 0 y tends to 0. Okay, तो ये जो बोथ डबल लिमिट है ये कन्वर्ट हो जाएगा ओनली लिमिट x टेंस टू 0 में. ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर बाई
x square into 1 plus m square. So x square got cancelled, and this is equal to 1 minus m square by 1 plus m square. So this is also depends on m. So we all know that if the limit depends on m, that is, this gives different values for different values of m, that is, the limit does not exist. Okay, so both exist, option D may discarded. So option A says that it is alpha exists but beta doesn't exist. Okay, so the next question is, and I think this is the last question for today. So it says that a function fxy on R2 has following partial derivatives. Okay, so del f del y equal to x square and del f del y equal to y square. Okay, then if it has functional directional derivative in all the directions, fxy is a function such that a del f del x is equal to x square. So del f del x means fx equal to x square and fy is equal to y square. Okay, now if we यहाँ पर f का कोई बात नहीं बोला है, but if we integrate with respect to x, then obviously this is also a polynomial. So suppose integration fx, that means क्या होगा, ये होगा x cube by 3 प्लस कोई एक सपोज कांस्टेंट आएगा, ठीक है, एंड कांस्टेंट ऑफ y लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड ये भी सिमिलरली इफ वी इंटीग्रेट दिस fy विद रिस्पेक्ट टू y, देन दिस शुड भी क्या होगा, y cube by 3 प्लस सपोज कोई एक कांस्टेंट आएगा, फंक्शन ऑफ y आएगा, ये फंक्शन ऑफ x आएगा, मतलब लीनियर ऑब्वियसली, मतलब जो फंक्शंस होगा वो तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। एंड यहाँ से भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ये तो मैंने बहुत दूर की बता दिया। तो देखो यहाँ पर दिस इज द फॉर्म ऑफ एफ एंड विच इज ऑब्वियसली ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, एंड ये जो ए वाई का फंक्शन होगा ये भी पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन हो, तो ये एक पॉलिनोमियल का टाइप का फंक्शन है एफ एक्स वाई ऑब्वियसली। ओके, ठीक है, एंड ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये जो ए वाई का वैल्यू होगा ना, ये आपका क्या होगा, y का कोई इंडिपेंडेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो डेल एफ डेल वाई का वैल्यू x का जो वैल्यू है वो सिंपल एक्स स्क्वायर। ओके, सो सिंपल एक्स स्क्वायर होगा, तो आप थोड़ा सा सोचोगे तो क्या होगा, देखो ये जो फंक्शन कोई यहाँ पर मतलब y का डिपेंडेंस नहीं होगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे कोई जो है फंक्शन मतलब ये जो ए वाई फंक्शन होगा ओनली y का फंक्शन, तो वो तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। एंड ये कैसा फंक्शन होता है नॉर्मली, मतलब नॉर्मली नहीं, ये जो होता है पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन, क्योंकि मैक्सिमम जो हो सकता है वो पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन, ठीक है। एंड ये आप सोचोगे एंड नहीं सोचोगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो दिस आर टू पॉलिनोमियल्स, मैंने थोड़ा बहुत डीपली बता दिया। तो ये टू पॉलिनोमियल्स है, दैट मीन्स ये तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशियल भी होगा, ठीक है। एंड इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन ऑब्वियसली जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन ऑल डायरेक्शन। ओके, डिफरेंशिएबल मतलब जो है एग्जिस्ट करेगा इन ऑल डायरेक्शन। ओके, तो ये क्या बोला है, ऑप्शन ए क्या बोला है, बोला है दैट एफ हैज डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन ऑल द डायरेक्शंस एंड एवरीवेयर। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर जो है डिफरेंशिएबिलिटी के में कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो उसका छोटा सा भाई है, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। एफ हैज डेरिवेटिव, ऑब्वियसली डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी तो होगा ही। एफ हैज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ओनली अलोंग द डायरेक्शन, नो, ऑल डायरेक्शन में होगा। एफ डज नॉट हैव डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट एनी डायरेक्शन, नो, डिफरेंशिएबल होगा तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेवरल वेरिएबल। ओके, सो दिस इज रिक्वेस्टेड वीडियो, आई थिंक शुभम ने बोला था, तो वन ऑफ द व्यूअर्स। so this is the session. So if the session is helpful, this is the last question obviously. So if the session is helpful, and also we take I also take previously 3 sessions on real analysis. One is on point set topology, second one is on countability, and third one is on I think sequence and series of function I think लेता। तो वो आप देख सकते हो, ठीक है, चैनल पे जाकर। लाइव सेक्शन में जाओगे तो आप मतलब जो लाइव का जो ऐसा एक आएगा ना, देखोगे आप मतलब यहाँ पर होता है होम, देन होता है वीडियोस, ऐसे लाइव जो एक कॉलम आएगा वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो, ये सारी के सारी वीडियोस आपको मिल जाएगा फॉर योर प्रैक्टिस फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जो बाद में देखेगा उसके लिए भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हो, कोई आपको मतलब क्वेरी है, ठीक है।
एंड कैसा लगा एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना, प्लीज लीव ए कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन, ओके, एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, ओके, सो बाय बाय।